how we are going to represent motion by using graph. Okay, so first of all, we have discussed distance time graph. In distance time graph, the first condition which we people are considering, distance time graph को ले रहे हैं और पहला condition क्या consider कर रहे हैं कि the distance time graph of a body moving at uniform speed, means we are talking about distance time graph of a body which who is moving at an uniform speed. So uniform speed में we can calculate by using the distance time graph. Next we are talking about non-uniform motion. अगर हम लोग non-uniform motion को ले, then what will be the type of graph? कैसा graph होगा? Yes. Curved it will be. Means our graph, if the distance time graph of a body is a straight line, then the speed is uniform. But if it is not a straight line, it is a curved line, then we can say it is a non-uniform motion. Non-uniform motion में है non-uniform motion. Non-uniform motion. Yes. तो ये दोनों clear हुआ, ये starting है एकदम जो basic है उसको. Yes ma'am. Okay, so for non-uniform motion, if we are drawing a graph, अगर हम लोग non-uniform motion के लिए graph को दिखा रहे हैं, ठीक है? तो for non-uniform motion, how we are going to show? This is for uniform speed, and for non-uniform motion, it will be a curved like this. ठीक है? वो curve हो जाएगा non-uniform motion में, ठीक है? तो this is the difference between uniform and non-uniform motion. ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के बीच में डिफरेंस मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है? If the object is not covering equal distance in equal interval of time, then we say that the object is in non-uniform motion. So about the speed time graph, we have three types of speed time graph for a moving body. किसी भी moving body के लिए हम लोगों के पास तीन तरह का speed time graph है. The first one we people are considering that when the speed of body remain constant and there is no acceleration. अगर speed constant हो और कोई acceleration ना हो, इसको हम लोग first example लेंगे. Second one, when the speed of the body changes at uniform rate. अगर speed जो है वो uniform rate में change हो रहा है, ठीक है? Second example we will take that, and third one we are talking about when the speed of body changes in non-uniform way. अगर non-uniform way में change हो रहा है तो क्या होगा? तो for speed time graph three conditions we are taking. The first one is that is when the speed of body remain constant and there is no acceleration. अगर speed constant रहता है और कोई acceleration नहीं होता है, okay, then what kind of graph we are going to get? कैसा graph हम लोगों को मिलेगा? So let us draw here. In one side we will take speed, in another side we will take time. Here I am representing speed. एक साइड में हमने स्पीड को रिप्रेजेंट किया, नेक्स्ट साइड में हम लोग टाइम को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, ठीक है? ये हम एक्स एक्सिस पे टाइम को हमने इंडिकेट कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज let us consider our initial point, that is here, which is here. Okay, so we are talking about the speed of a body which remain constant. अगर body का speed constant है, okay, then how we are going to measure it? So the graph which we people are going to get, it is of this type. It is parallel to the x-axis. x-axis होगा इसके, x-axis के parallel हम लोगों को ग्राफ मिलेगा, ठीक है? कांस्टेंट स्पीड में जा रहा मींस एक हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिलेगा. Yes ma'am, because time interval change हो रहा है. Yes, because yes, what is the reason? Time interval change हो रहा है. Yes, by saying the speed of body is constant, we mean that the speed does not change with time and hence there is no acceleration. So a speed time graph of a moving body with constant speed is a straight line parallel to the x-axis. ये जो हमारा x-axis है, इसके parallel ये line होगा. It is going to be parallel to the x-axis because it is indicating that it is moving with constant speed. ये constant speed से move कर रहा है, ठीक है? So this is the first thing which we people have taken. Now how to calculate the distance? अब इसका हम लोग distance कैसे calculate करेंगे, ठीक है? Constant speed से move कर रहा है. अब हमको suppose here we people have taken one point B here. So here I am taking point B and we have to calculate
द स्पीड को हम लोगों को कैलकुलेट करना है. टाइम इज ऑलरेडी देयर, टाइम वहां पे दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल सिंपली जॉइन दिस वन same way as we people have drawn perpendicular, here also we people will draw like this. ठीक है, हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे जैसे उसमें हम लोग किए थे. और उसके बाद जो है स्पीड इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. Distance traveled by time taken, that is speed. Means if we are going to write it, how we are going to write it, what is the distance traveled, kitna distance ye cover kiya, distance traveled equal to, we are going to write it as speed into time taken. Okay, so Yes, what is the speed kya hai hum logon ka, what is the speed at sea, it will be, क्या स्पीड है बताओ मुझे. हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, कैसे कैलकुलेट करेंगे. we want to find out the speed, so the formula is it is distance traveled by time taken. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ इसको. BC into OC. Yes, कैसे करोगे बताओ. Here we are considering the points AB, this one is it. तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें से डिस्टेंस को हमको निकालना है. द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, यस रेक्टेंगुलर शेप हम लोगों को मिल रहा है. ठीक है, Length into breadth. एंड वी से दैट AB into BC. क्या हम लोग ये देख सकते हैं कि CD इक्वल टू OA है, CD इक्वल टू OA, ये होगा कि Yes, नहीं. एंड Yes, ma'am. D इक्वल टू OA है, C is Yes, equal ma'am. to OA. OC equals to OA. Yes, so distance traveled को हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, Length into breadth. लेंथ इनटू ब्रेथ करके मींस एरिया को निकाल लेंगे. एरिया किसका निकालेंगे, OA BC का. तो अगर पूरे का एरिया Yes, को ma'am. फाइंड आउट कर लिए, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्पीड. ठीक है ना. तो हम लोग जो है Yes, ma'am. इन स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया इनक्लोज्ड बाय स्पीड टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. इससे हम लोगों को डिस्टेंस का फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और कितना टाइम लगा. Distance. So for this we people are considering some examples. कुछ examples लेके इसको हम लोग second situation what we are talking about is that when speed change at uniform rate, अगर uniform rate में speed change हो रहा है, uniform acceleration है, then acceleration equal to, we know that it is change in speed upon time taken or velocity. Acceleration equal to change in velocity upon time taken पढ़ते हैं. ठीक है. तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम लोगों को ये ग्राफ कैसा मिल जाएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. It is going to be a straight line. Okay, and how we are going to find out the acceleration, distance traveled को कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे. Yes, we are talking about the situation of speed changes at uniform rate. Okay, तो acceleration equal to, we are saying change into velocity upon time taken. तो here if we are considering different points, अगर हम लोग अलग अलग points को ले ले तो हमारे ग्राफ में change in speed जो है कितना हुआ और कितना टाइम टेकन हुआ, उसको हम लोग अगर लिखेंगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा, लेट अस कंसीडर सम पॉइंट्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ तो ग्राफ देख के. व्हाट विल बी, हाउ वी आर गोइंग टू राइट द एक्सेलरेशन, इट विल बी BC अपॉन, व्हाट विल बी देयर, BC अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, इट इज BC अपॉन OC. This is our acceleration. ये हमारा acceleration है, uniform acceleration. ठीक है. तो acceleration इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं, and what kind of slope we are going to get, कैसा slope हम लोगों को मिल रहा है, it will be 45 degree. Yes, it will the slope of speed time graph
of a moving body gives it acceleration. So acceleration equal to, we are going to find out now, the distance traveled by moving body in a given time is also calculated. Distance travel को भी इससे हम लोग calculate कर सकते हैं. कैसे calculate करेंगे? Yes, ma'am. How we are going to calculate the distance traveled? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Yes, by assuming Yes, it as a ma'am. triangle, we can going to find Yes, out. ma'am. Right angle triangle. What we are going to Pythagoras, that is the assuming it as a rectangle, we are going to find out that is half into base into height. यही फॉर्मूला से निकालोगे ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला से हम लोग जो है इसको फाइंड आउट कर लो. लेकिन अगर हम लोग बात करें थर्ड कंडीशन की, ठीक है, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट. तो देयर व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ वी आर गोइंग टू गेट? कैसा ग्राफ मिलेगा उस कंडीशन में? टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट. अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट में स्पीड चेंज हो रहा है तब हम लोग कैसा ग्राफ बनाएंगे? इज दिस वन क्लियर टू यू ऑल? क्या ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. या इसमें प्रॉब्लम है? बताओ तो मुझे. In a short, if you want to say how you are going to explain it. Yes. मैम ऐसा ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन में शो करे यूनिफॉर्म मोशन को. Yes. हम शायद ये बोल सकते हैं. Now listen. Yes. When an object travel equal distance in equal interval of time, then the slope of graph is a straight line and it moves with uniform speed. Yes. And when an object cover unequal distance in equal interval of time, then it's move with a non-uniform speed and the slope of a graph is a curve shape. Yes. Now see, for a distance time graph, when we are talking about, as I told you that we will represent the time on the x-axis and the distance is represented on the y-axis. Means on the x-axis we are going to take the time, on y-axis we are going to take the distance. Now when earlier I already informed to you people that we people will take two physical quantity. One is our dependent quantity, another one is our independent quantity. So here the dependent quantity is the distance or the velocity and independent quantity is our time. So let us draw these three graphs. See, here we are doing, as I told you, on x-axis if we are representing the time and on y-axis if we are representing the distance. Okay, this is our distance, this is our say time. In this way we are representing on x and y axis. Then for a distance time graph, when we are talking, when the object is moving at a constant we can say speed. Okay? Here we are taking the situation of uniform speed, means covering equal distance in equal interval of time. So we are going to get this type of, but if the we are talking about that the object is stationary, at that time we are going to draw it like this. Okay. Next, when we are talking about the third situation where non-uniform speed is there, then we are going to get it like this. That is the curved line. It is the curved line like this. Okay. So three situations we people have discussed here. तीन situation हम लोग discuss किए थे. डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हम लोग डिस्कस किए थे ये. ओके. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम लोग डिस्कस किए थे. डू यू रिमेम्बर? लिसन माय सेंटेंस केयरफुली. व्हाट आई एम सेइंग दैट व्हेन अ बॉडी moves with uniform acceleration, its speed changes by equal amount in equal interval of time. So when we are going to represent it by speed time graph, okay, we are showing actually what? We are showing actually uniform acceleration. तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि the body is changing, it is moving with uniform acceleration and its speed changes equal amount in equal interval of time. So let us draw first of all this one. हम लोग सबसे पहले इसको draw कर लेते हैं. There x-axis and y-axis is there. We are making speed time graph.
तो हम लोग स्पीड और टाइम को इंडिकेट कर दिए, स्पीड टाइम ग्राफ को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। हियर आई पुट द इनिशियल पॉइंट, जो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, हियर इन दिस वे स्पीड इज एंड हियर इन दिस वे टाइम इज इंडिकेटेड। तो हम लोगों को कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो व्हेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल बी देयर इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे उसको, ठीक है। It is changing, it is what it is showing that it is changing, it is covering equal speed in equal interval of time, ठीक है। its speed changes equal by equal interval of time, here we are saying। so ये हम लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर दिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। अब देखो, if we want to calculate the acceleration, then we will calculate the change in velocity upon time taken। तो what is the change in velocity? change in velocity क्या है, ठीक है, या टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इफ वी आर गोइंग टू डू, देन वी आर गोइंग टू गेट द एक्सेलरेशन। तो हियर लेट अस कंसीडर दिस एज पॉइंट पी, अगर हम लोग इसको पॉइंट पी मान लें, ठीक है, तो हम लोग जो है इसका एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, इट विल बी से वी ड्रॉ वन परपेंडिकुलर हियर लाइक दिस, ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ठीक है, इट इज लाइक दिस, से कंसीडर इट एज PQ, ठीक। तो what we are going to do, acceleration equal to हम लोग लिख सकते हैं this upon this perpendicular by base, ये लिख सकते हैं हम, acceleration equal yes, to this one, but this is the slope, ये क्या है, slope है, PQ upon OQ हम लोग लिखे हैं, okay, and yes, the slope of speed time graph is a moving body if its acceleration। Now distance travel equal to area of triangle OPQ। अब हम लोग distance travel निकालेंगे कि ये हमारा कितना distance को कवर किया, ठीक है, कितना distance जो है वो कवर हुआ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को निकाल लेंगे, ये जो एरिया है हमारा, ये इस एरिया को निकालेंगे, ठीक है। तो then we are going to use Pythagoras theorem, that is half into half area of rectangle। area of rectangle क्या हो जाएगा, here we people are taking talking about area of rectangle, हमारा क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पे, ये इस तरह से हमने प्लेस कर दिया है, तो ये इसका अगर एरिया हम निकालते हैं तो that will be the answer। so area of this triangle rectangle will be, ये पूरा का एरिया निकालना है इस तरह से, half into base in half into length into breadth, ठीक, not base into height, it is half into length into breadth we are doing। so length और breadth कितना है हम लोगों का, tell me what we are going to write, कैसे इसको लिखेंगे फॉर्मूला को, yes, half into PQ into half OQ into what we are going to write, we are calculating actually what, area of the rectangle। तो rectangle का एरिया क्या है, half into base into height, yes बताओ, OR into OQ होगा, length into breadth, yes ma'am, OR this one is equal to this one, so OR into this OQ, this is the area of the rectangle, ये area of rectangle हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बता रहे थे उस वक्त कि कैसे जो है इसको जो है तुम लोग सॉल्व करोगे। For that what we are going to do, we are going to draw simply perpendiculars, हम लोग को